स्टूडेंट्स, तुम लोग है ना, एयरफोन लगा के बैठ जाओ। शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज रहेगा। तो डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम रहेगा, कुछ वॉल्यूम प्रॉपर से नहीं आ रहा है ना। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, तुम लोग। सही ईयरफोन पहनना ही है। हाँ, सॉरी, तभी भी इससे आवाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ ओम? ईयरफोन तभी भी पहना है बट आवाज नहीं आ रहा है कभी भी। अच्छा, तूने एयरफोन लगाने के बाद भी आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है सर। सर एक बार आप ये कर लो सर, लेक्चर चालू कर दो, मैं बताता हूँ सर। गणेश सर। गणेश सर। हाँ हाँ सर, वॉल्यूम बहुत अब तक कम आ रहा है सर। एयरफोन लगाने के बाद भी बहुत कम है। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, स्टूडेंट्स अभी बराबर है ना? अभी सर मैंने मोबाइल थ्रू ज्वाइन किया, Yes, पहले sir. मैंने लैपटॉप के थ्रू ज्वाइन किया था। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी राइट है सर, राइट है, अभी राइट है। तो मैं अभी स्टूडेंट ठीक है, डन, चालू करते हैं अभी। स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके ओके, डन। यस सर, आवाज आ Okay, ओके सर, स्टार्ट कर दो सर। okay. Proceeding with today's lecture, student, I just want to ask you, how much portion does college has completed for CS2? We are going to start with paper 2, microprocessor part today. So just tell me about what you people are actually have the idea of criteria with for the paper 2 according to the college perspective. Yes. हाँ सर, हमारे कॉलेज में फर्स्ट लेसन हुआ है, इंट्रोडक्शन Lesson हो चुका है. Okay. हाँ. Okay. How many people have understood this particular thing? Microprocessor part. Yes. कोई बता सकता है माइक्रोप्रोसेसर के बारे में? We are about to start. हम स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली बेसिक से जाएंगे. But before going to that, if anyone has got any idea about microprocessor, they can share what you got out of that chapter. Though from college, and we are learning as fresh, you people can tell me what you people are having idea about microprocessor. Whenever the word microprocessor comes, what exactly is the definition for you? माइक्रोप्रोसेसर एग्जैक्टली क्या है, किसी को समझा है? नो सर. Okay, so we'll start fresh. I will share my screen so that you people will get that. But Sir, you are on mute. so can you see the PDF copy, student? The first chapter itself we have is a introduction to microprocessor and organization of 8085. In that we are going to learn introduction, what exactly is the concept of microprocessor, then what is the evolution, how microprocessor series has started, then block diagram, which is in one of the important criteria of understanding this particular process, and one more thing, pin diagram, which is very much important in this chapter to understand how microprocessor works. Before going to the criteria of understanding, I will explain you what is microprocessor. Okay. Now, हमें पता है कि there is a CPU in a computer, and without CPU, no input device, no output device can interact. So definitely, there is a concept called as central processing unit, and because of central processing unit,
we are able to do that binary translation. Okay. Now coming to the point of microprocessor, आपको मुझे एक basic question पूछना है. What is the difference between data and information? Yes. Data और information का difference किसी को पता है? Anyone? See, data is always input. So whatever we provide to computer is a data. Data is getting accepted. Then there is a binary translation. Okay, हर एक data का binary translation होता है and finally information generate होती है. तो आपको जो screen पे दिख रहा है as a output, that is information. And whatever we are typing or providing as a selection criteria is a data that is input. So microcomputer concept is very much important to understand microprocessor criteria. So data, processing and information is the basic fundamental. But processing happens where, student? Processing happens inside CPU, that is central processing unit. So the basic definition of a microprocessor is a central processing unit which is built on single integrated circuit. What is the definition of microprocessor, student? This is central processing unit. Microprocessor is central processing unit which is built on single integrated circuit. Now इसे कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप लोग? जैसे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे टाइनी कंपोनेंट्स होते हैं और सारे कंपोनेंट्स को अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो उसे एक पर्टिकुलर सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सीपीयू को ही हम लोग माइक्रोप्रोसेसर डिफाइन कर सकते हैं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड व्हाई द माइक्रोप्रोसेसर्स आर यूज्ड, बिकॉज कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी. ओके, कंप्यूटर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है टू अंडरस्टैंड 0 and 1. वी हैव माइक्रोप्रोसेसर एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर. Sir, Translate that input into binary. Finally, the processing, उसका storage is very much important. Okay. So the first thing, सबको microprocessor का definition पता होना चाहिए. What is the definition of microprocessor, student? Microprocessor is central processing unit. And this central processing unit किस पे build किया है? एक single IC पे. IC is a integrated circuit. उस single IC पे पूरा माइक्रोप्रोसेसर सेटअप उन्होंने क्या किया है? डिजाइन किया है. नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट बहुत सारे टाइनी कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे एज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, एज डिटेल पार्ट्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल इज क्लियर टू यू. माइक्रोप्रोसेसर का बेसिक स्ट्रक्चर समझा? Yes, sir. yes, sir. Yes. Now, coming to the point as introductory part, computer central processing unit is built on single IC. So this definition carries 1 mark, student. So you people need to understand how this definition. So you are on mute. And according to you people are going to write definition. Okay, now the next thing, it is actually considered as a digital computer. And if there is a yes, Om, you can ask. Yes, Om Salekar. Hello.
Does anyone want to ask any question? Hello, am I audible, student? Actually, there are lots of technical issues because of which in between there is an interruption. But now I will again start with that. Hello. Hello. Am I audible now? Hello. Okay, now we'll continue. Lots of disturbances in first lecture itself, so it distracts most of the time. But I hopefully now I hope you people are able to hear me properly. Yes, students. Host has muted everyone. So later on, after a certain time, I will ask them to unmute you. But even if you have any doubt in between in the chat box, you can put so that we can have some discussions later on. Because चैप्टर को थोड़ा सा प्रोसीड होने दो. एक प्रोसीडिंग के बाद आपके जो भी सारे डाउट्स है एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी स्टार्टेड विद अ माइक्रो प्रोसेसर का डेफिनेशन. इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है,
देन उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर की जनरेशन अपडेट हुई है, देन ऑन टू विच एक ब्लॉक डायग्राम। हेलो सर। हेलो, हाँ सर, तो अनम्यूट हो गए थे सर। ओके, हेलो, हाँ सर, कंटिन्यू सर। हाँ हाँ, so microprocessor definition, Hello. which you people need to understand one thing कि कोई भी माइक्रोप्रोसेसर एग्जैक्टली क्या होता है। माइक्रोप्रोसेसर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। एक्चुअली राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड वी आर लर्निंग व्हाट इज सीपीयू। इट इज नॉट अबाउट फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, इट इज ऑलवेज अ कंस्ट्रक्टिव क्राइटेरिया कि सीपीयू में एक्चुअल डेवलपमेंट्स कैसे है। यू आर गोइंग डीप विद द हार्डवेयर पार्ट। चन्नावे Okay, student will continue. Now, coming to the point, what is microprocessor? I have already discussed that microprocessor is a central processing unit which actually built on a single integrated circuit. Okay, तो single integrated circuit पे microprocessor actually design किया जाता है as a CPU. तो जो भी CPU के fundamentals है, hardware constructive points में आपको learn करने हैं इस chapter में. So at the beginning only you need to understand the definition. Then on to which the second part is you people are going to understand how this particular processor is going to work. So most probably there is one more definition after microprocessor is a microcomputer. Now what is microcomputer? I will tell you. Microcomputer is one more fundamental in which all the criterias of processing are controlled. हर एक प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने का एक फीचर होता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो दो फंडामेंटल्स और है आपके पास, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। व्हेन यू वांट टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग डेटा, तो डेटा डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए कभी नहीं जाता स्टूडेंट। सबसे पहले डेटा को स्टोर किया जाता है और डेटा को स्टोर करने के बाद यू पीपल नीड टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेटा विथ अंडरस्टैंडिंग हाउ डेटा इज स्टोर्ड, डेटा को कैसे स्टोर किया जाएगा, फिर उसके बाद डेटा को किस तरीके से प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। सो इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू जो है, इंटरनल वर्किंग ऑफ सीपीयू जो है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर।
Now one more thing, when you are studying this particular chapter, आपको ब्लॉक डायग्राम्स में वर्किंग ऑफ माइक्रोप्रोसेसर पता चल जाएगा. एंड इन वन मोर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया कि जब आप फंडामेंटली इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टडी करोगे तो आपको और एक कंटेंट याद रखना है. दैट इज दिस चैप्टर हैज गॉट वेटेज ऑफ 20 to 21 मार्क्स. तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप इस चैप्टर को अच्छे से यूज करो in utilizing one of the most important chapter as such. So microcomputer mein you need to understand one more thing, that how you are going to use this particular utility and how you are going to get this particular fundamental control on the chapters itself. So let me share one particular screen so that you can understand how this particular chapter is going to understood. Okay, so I will just we'll start with the introduction. Okay. Okay, most of the people have said unit test का कंटेंट क्या है, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में है या फिर कितने चैप्टर्स हुए. बट बिगिनिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट आपको जब स्टडी करना है तो स्टडी करते वक्त बेसिक फंडामेंटल्स को ही पहले स्टडी करना है. अदरवाइज आपको चैप्टर्स थोड़े हेवी जाएंगे पार्ट 2 के. तो पार्ट 2 का सबसे हाईएस्ट वेटेज चैप्टर जो है वो पहले 2 चैप्टर्स है. उसके बाद यू पीपल आर गोइंग टू हैव नेटवर्किंग, देन यू आर हैविंग माइक्रो कंट्रोलर, x86 family, like that. So this chapter is very lengthy in terms of component study. और आप जब इसे स्टडी करोगे तो थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना है डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग पे. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्यों यूज किया जाता है. तो बेसिकली कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस जब परफॉर्म होते हैं उन ऑपरेशंस को स्टोर करने के लिए एंड अ पर्टिकुलर इवेंट क्रिएट करने के लिए, लाइक सपोज आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. वी यूज कैलकुलेटर एक्चुअली, बट बिहाइंड द सीन कैलकुलेटर को कंट्रोल करने वाला, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन को कंट्रोल करने वाला ALU, दैट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, हमारे पास सेपरेटली अवेलेबल होता है. एंड एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन द मेमोरी. तो मेमोरी में भी परमानेंट मेमोरीज एंड टेम्पररी मेमोरीज का स्टोरेज होता है. ये सब आपको डिटेल में इस चैप्टर में क्या करना है, स्टडी करना है. नाउ कमिंग टू द डायग्राम, आपको अभी एक स्क्रीन पे डायग्राम दिखेगा जिसमें ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर करके वर्ड दिया है. यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस दिखेंगे, आउटपुट डिवाइस दिखेगा और बीच में माइक्रो प्रोसेसर करके एक डायग्राम है. इन द माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट वी आर हैविंग ALU, दैट इज अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, वी आर हैविंग कंट्रोल यूनिट and there are register arrays with which memory unit is highly connected. So इसे आपको कैसे समझना है, I will explain you that. Input devices से student data आएगा, data कहीं पे पहले store होगा, that's why memory unit आपको outer box में दिखेगा. And then output devices आपको जो दिख रहे हैं processor को, microprocessor को connected दिखेंगे. So input is the first thing. Then whatever input comes, input को हम data बोलेंगे.
एवरी ऑफ द डेटा इज गेटिंग स्टोर्ड फर्स्ट. जो भी स्टोर होगा उस डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे. लाइक सपोज आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है तो डेटा स्टोर करना पड़ेगा पहले और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे. अगर आप कैलकुलेशन लॉजिकल लेवल या फिर अरिथमेटिकल लेवल कोई कैलकुलेशंस कर रहे हो तो डेफिनेटली एएलयू का रोल आ जाता है वहां पे. एंड देन सारे एक्टिविटीज को राइट फ्रॉम इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, मेमोरी सभी को कंट्रोल करने के लिए वी आर हैविंग कंट्रोल यूनिट विद अस. सो डेफिनेटली microcomputer working is also incomplete with a microprocessor. So you people need to understand that this chapter is very much important to understand internal component and working of that particular microprocessor. So सबसे पहला टॉपिक क्या है स्टूडेंट? डेफिनेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर. डेफिनेशन के बाद आपको माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज यू कैनॉट डायरेक्टली प्रोसीड विद अ माइक्रोप्रोसेसर अंडरस्टैंडिंग. आपको माइक्रो कंप्यूटर वर्ड पहले पता होना चाहिए कि वॉट एवर सिस्टम्स वी आर यूजिंग, वेदर इट इज अ मोबाइल, वेदर इट इज अ पर्सनल कंप्यूटर, वेदर इट इज अ लैपटॉप, एनी टाइप ऑफ क्राइटेरियाज ऑफ डिवाइसेस वी आर यूजिंग, वर्किंग क्या है उसके अंदर वो पता होना चाहिए. सो द फर्स्ट एवर वर्किंग इज सीपीयू एज अ अंडरस्टैंडिंग विद अ माइक्रो प्रोसेसर, एंड माइक्रो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए. सो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट एंड प्रोसेसर. प्रोसेसर के अंदर और 3 कंपार्टमेंट्स जहां पे एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर अरे है. और वहां पे लिखा है कि एएलयू परफॉर्म्स अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. तो जो भी डेटा आपको रिसीव होगा फ्रॉम इनपुट, इनपुट ऑलवेज गिव्स यू डेटा. जो भी चीजें आएंगी इनपुट से वो डेटा ही होगी. दैट इज अ फॉर्म थिंग. आपको कैलकुलेटिव रहना है जब आप स्टडी करोगे तो इनपुट इज ऑलवेज डेटा, आउटपुट इज ऑलवेज इंफॉर्मेशन, बट इन बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग होता है जहां पे बाइनरी ट्रांसलेशन होते हैं 0 एंड 1 के. तो ये 0 एंड 1 की इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होती है, कहाँ पे कम्युनिकेट होती है, कैसे सेटल होती है, उस स्टडी को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में इंप्लीमेंट करते हैं. सो दिस यू समथिंग यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. नाउ इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो आज के डेट में 64 बिट आर्किटेक्चर वाली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है. बट शुरुआत में स्टूडेंट इतने ज्यादा बिट्स की ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं थी. टुडे व्हाट वी आर यूजिंग इज वेरी मल्टीटास्किंग एंड हाई पावर रेजोल्यूशन काइंड ऑफ सिस्टम्स. बट जब शुरुआत हुई थी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करने की तो सबसे पहला जो जनरेशन था सिर्फ 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, ओनली 4 बिट. एंड इफ आई से 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट काइंड ऑफ क्राइटेरियाज, तो 1 बाइट की अगर बात करें, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. तो पहला वाला जो माइक्रो प्रोसेसर है, नॉट इवन 1 बिट और 1 बाइट, वो पूरा हाफ बाइट्स में था. मींस आई रादर से 4 बिट इज इक्वल टू निबल. तो पूरा हाफ बाइट में कंस्ट्रक्ट हुआ था इतना बड़ा माइक्रो प्रोसेसर जो कि इंटेल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया था. अभी व्हाई टू हैव दिस हिस्ट्री टू बी स्टडीड, माइक्रो प्रोसेसर का हिस्ट्री क्यों स्टडी करना है? बिकॉज इट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल टू हैव हाउ द माइक्रो प्रोसेसर सीरीज आर प्रोग्रेस. माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज प्रोग्रेस कैसे हुई है उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इवोल्यूशन स्टडी करना पड़ेगा. तो चैप्टर में माइक्रो प्रोसेसर डेफिनेशन के बाद, माइक्रो कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बाद आपको सबसे पहला जो टॉपिक स्टडी करना है वो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है. तो द वेरी फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ 4 बिट एंड what is actually it is created for is Intel 40004 kind of series. So the name is important when you are going to write answer for the evolution. Most probably evolution का question वो लोग पूछते नहीं एग्जाम में, because that is only for understanding criteria for the pattern of study. But you need to understand one more thing कि जब आपको generations पता रहेंगे तो उसके basis पे MCQs वगैरह पूछ सकते हैं. The first generation of microprocessor family is of dash bits. So सबसे पहला जनरेशन कितने बिट्स का था? 4 बिट्स का था. Now next on to which we have a second generation microprocessor जो कि 8 बिट का है. Now see the first one is 4 bit, second one is 8 bit. So according to that, Intel has again invented a new generation, that is second generation of 8 bit, by improving some arithmetical and logical operations. So हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज है स्टूडेंट. जैसे कि पहले जनरेशन में आप देखोगे so there is a quality in which it also can perform simple arithmetical and logical operations like addition, subtraction,
लॉजिकल एंड एंड और ऑपरेशंस, बट एट द सेम टाइम सेकेंड जनरेशन जो है 8 बिट का, उसमें भी आप देख सकते हो यू हैव माइक्रो प्रोसेसर दैट कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन 8 बिट। तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ गया स्टूडेंट। पहला सीरीज था 4004, अभी का जो सीरीज है सेकेंड जनरेशन में दैट इज 8008। लाइक दैट दे हैव इम्प्रूव्ड सम बीट्स, increased some capacity of microprocessor, and then on to which they have started with series of generation with the evolution. तो second generation student 8 bit का था, 8 bit में उन्होंने improvise किया है कि 8 bit calculations हो पाए, addition, subtraction and arithmetical criteria. Now third generation is of 16 bit student. Now in the 16 bit what they have improved, the third generation microprocessor which were introduced in the 1978 Intel by 8086, Zilog Z800 and 80286, and the performance of microcomputer को improve करने के लिए 16 बीट का ये जो थर्ड जनरेशन है माइक्रो प्रोसेसर का वो ज्यादा हेल्पफुल था स्टूडेंट। सो व्हेनेवर वी आर स्टडीइंग टॉपिक्स, important points you need to note down. Why? Because study of microprocessor is very complex. In terms of evolution also, evolution में वो लोग ने beat by beat improvisation किया है, और capacity of microcomputer, capacity of processing is very improved according to the microprocessor generation. So 16-bit processors are very powerful to perform and increase performance of the microcomputer. So we need to understand one more thing, how the progress is moving on. Then the fourth generation 16-bit से लेके 32-bit को improvise किया उन्होंने. That is the fourth generation of microprocessor. So 32-bit में क्या हुआ? It is actually most popular enough to get into 80386 series. So हर series के ऊपर एक question आप लोग को MCQ में पूछ सकते हैं कि fourth generation with a 32-bit kind of microprocessor is with dash series. Dash series में वो लोग 80386, 80486 ऐसे बहुत सारे options दे सकते हैं, and उन option में से अगर आपको fix answer पता है कि 16-bit 32-bit में कौन सी वाली generation launch हुई थी, you can easily give that answer because answer is there in the MCQs with any kind of option. So आपको जब study करोगे तो basically root points पे focus करो students, तो आपको easy हो जाएगा to get into microprocessor chapter study. And the weightage is good. Weightage is 20 to 21 marks. So आप इसे skip नहीं कर सकते chapter को paper 2 में, because paper 2 में आपको अगर score करना है तो first 2 chapters are very much important, और उसे आप अगर content wise study करोगे so definitely you will learn all these fundamentals in understanding microprocessor criteria. Now after 32-bit student, we are having 5th generation, that is 64-bit microprocessor. So in the 64-bit microprocessor, what is the quality? It is actually allowing you to work with a multiple CPUs in a single system. So multi-processing criteria can be achieved in this. So this is very much important for you to understand how generations are proceeding in this particular fundamental. So entire criteria of microprocessor studies are very much important. So how many generations are there of microprocessor? There are 5 generations. We started with 4th one, that is 4th bit. Then we are having 8 bit. Then we are having 16 bit. Then we are having 32 bit. And the last one, 5th generation, is 64-bit. So if there is a question, explain evolution of microprocessor. In the evolution, you need to write all these evolutions, whatever are there. If you are writing for 4 marks, if you are writing for 3 marks, according to that, you need to explain the question. Okay. So I hope this particular part is very much clear to you. Definition of microprocessor, again, I am repeating because so many people don't understand what is microprocessor. So microprocessor is central processing unit, which is built on single integrated circuit. This definition carries 1 mark student. So it is very much important for you not to mug up this answer or not to mug up any particular answer frame, but to understand कि board में जब appear करेंगे तो proper understanding के साथ आप elaborate कर सकते हो कोई भी answer को अपने own words में without changing any meaning of that particular statement. So please have comfortableness in understanding all this stuff. Just tell me on this particular part, whatever we have discussed,
Is there any doubt you people have or not understood anything? You can first message me in the chat box. Yes. Anyone want to ask any question? Any difficulty in definition? Okay. Anyone want to ask question? They can raise their hand. I will unmute them so that they can interact with me. Okay, okay, just a minute. Yes. Yes, Om, you can ask your question. Hello. हेलो Yes. सर, You can ask your question. ये जो लेसन है पहले के सर जो थे उनको पढ़ा के हो चुका आधा आधा उनका आधा जेनेरिक माइक्रो प्रोसेस का वो चार्ट ना वो चालू था. Generic microprocessor. Okay. Because I got to know कि microprocessor start करना है. So topic what exactly is there I am not aware of. So I thought to start with the fresh. So I hope other things are clear to everyone. Yeah, Then yes, previous topics clear थे आपको सबको? हाँ सर. Okay. Okay, so generic microprocessor वाला part start करना है. हाँ, उनका ALU हो गया है. उनका ये टेम्पररी रजिस्टर वो रजिस्टर हो चुका है वो पार्ट चार्ट में. Okay. 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 So previous concepts सारे आपके clear है, कोई problem नहीं है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Then we'll just discuss with generic microprocessor part. Why I'm asking actually this particular sort of things, because what is happening out when we proceed further with the content, most probably the basic points जो भी हमारे chapters के होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डीप होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको मेन आर्किटेक्चरल पार्ट समझ में आ जाता है तो उनका वेटेज जो होता है वो आगे के क्राइटेरियाज में रिफ्लेक्ट होता है. तो कैन आई आस्क वन क्वेश्चन दैट व्हाट इज एक्यूमुलेटर, क्योंकि ये बिगिनिंग में एक्यूमुलेटर ब्लॉक डायग्राम में एक्सप्लेन हो जाता है. कैन एनी वन ऑफ यू विल टेल दैट पर्टिकुलर पार्ट सो दैट आई कैन गेट कंफर्मेशंस कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो चुका है. What is accumulator? Anyone? Because we can easily proceed with other topics, but मुझे थोड़ा confirmation लेना है कि आपको वो basic block diagrams के जो architectural prototypes है वो समझे कि नहीं. एक्यूमुलेटर का रोल एग्जैक्टली क्या है? एक्यूमुलेटर सिर्फ रिजल्ट स्टोर करता है कि बाकी भी कुछ एक्टिविटीज करता है?
One answer I got from the chat box is it stores result. But other than result, what it stores? Yes. सर वो माइनस में जो आंसर रिजल्ट आता है वो सेव करता है. ओके देखो, एक्यूमुलेटर का एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट जो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि एक्यूमुलेटर की जो कैपेसिटी है वो एक्चुअली जो इनकमिंग ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड्स का मीनिंग भी मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअली हमें अगर दो चीजों के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए हमें दो चीजें पहले तो होनी चाहिए हमारे पास. जैसे कि सपोज ए है एंड बी है, तो ए एंड बी का एडिशन होगा और बाद में उसका रिजल्ट आएगा. तो एक्यूमुलेटर की कैपेसिटी क्या है स्टूडेंट? एट ए टाइम वो कोई एक ही ऑपरेंड स्टोर कर सकता है, फिर उस एक ऑपरेंड को उसे फ्री करना होता है जो कि नेक्स्ट रजिस्टर में जाके बैठेगा, फिर एक्यूमुलेटर फ्री हो जाएगा, उसके बाद एक नया इनपुट आएगा दूसरा ऑपरेंड, वो भी एक्यूमुलेटर स्टोर करेगा और आगे सेंड कर देगा. फिर उन दोनों का एडिशन होगा जिस भी रजिस्टर्स में वो सेटल है, और वो एडिशन होने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, बाद में वो भी एक्यूमुलेटर में ही आएगा. सो प्लीज रिमेंबर वन थिंग कि एक्यूमुलेटर का रोल क्या है कि जितने भी ऑपरेंड्स है उनको एंट्री पॉइंट भी एक्यूमुलेटर है. एक्यूमुलेटर से जो भी डेटा आता है वो जाता फॉरवर्ड होता है एक पर्टिकुलर रजिस्टर में जिनको हम टेम्पररी रजिस्टर्स बोलते हैं, वहां पे वो डेटा सेटल होता है, फिर पर्टिकुलर लोकेशन से उन पर्टिकुलर डेटास का एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म होता है, फाइनली जो भी रिजल्ट आता है वो फिर से एक्यूमुलेटर में ही आता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ how these components are working. So accumulator is one common place where every of the operand is having an incoming, as well as it goes for the processing with the temporary registers, and finally whatever operation is getting completed, they are completing all these operations and result जो भी होगा student finally फिर से आएगा accumulator में. So accumulator does not only shows result और does not only stores result, वो हर एक सिंगल ऑपरेंड जो भी इनकमिंग में है उसको भी स्टोर करके आगे फॉरवर्ड करता है. इज इट क्लियर? सो अगर थियरी में आप कुछ अलग रिप्रेजेंट करोगे तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज सीएस में देखो 50 मार्क्स का जो आपको 3 आवर्स का टाइमिंग दिया है बोर्ड एग्जाम में, उसमें आपका कंटेंट नॉलेज कितना अच्छा है, आपने आंसर लिखते हुए कितना समझ के लिखा है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, that is very much important, because teacher when accessing all this particular programs, all this particular theories, they will come to know what you are writing, what things you have written and how you are explaining or understood that particular part. तो accumulator को आप लोग सिर्फ results के लिए या फिर particular activity के लिए यूज नहीं कर रहे हो, it's a entry point, जिस entry point में incoming एक single operand ही at a time आ सकता है. और फिर भी हम लोग अगर capacity देखें तो 8 बिट की जो कैपेसिटी है उसमें 8 बिट से ज्यादा इनपुट ले ही नहीं सकता एक्यूमुलेटर. सो उसमें भी 8085 8086 के हिसाब से कैपेसिटी इज इम्प्रूव्ड. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स आर टू बी स्टडीड. अदरवाइज आपका जो एक्सप्लेनेशन है, इफ इट गोज विद अ डिफरेंट वे, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट मार्क्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? एक्यूमुलेटर को आप लोग जब पढ़ते हो थियरी पार्ट में, so even that explanation goes mostly correct according to the criteria. Otherwise, it is not that easy, student, to explain in 1 or 2 lines how accumulator works. तो सबसे पहले आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहिए तो नोट डाउन करके रखो. Accumulator has got 2 roles actually, to show the result also and to accept the every operand जो भी incoming है, every operand को accept करना. At a time वो एक ही operand ले सकता है, तो पहले उसे पहला ऑपरेंड लेना पड़ता है, फिर उसे एक जगह पे टेम्पररी रजिस्टर्स में सेंड करना पड़ता है, तब एक्यूमुलेटर फ्री हो जाता है दूसरे इनपुट के लिए. और दूसरा इनपुट जब आता है तो उसे भी सेंड करना पड़ता है टू द टेम्पररी रजिस्टर्स, फिर वो लोकेशंस पे ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं. रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट फिर से एक्यूमुलेटर में ही आता है. सो दिस समथिंग इज द एक्सप्लेनेशन दैट इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटर. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? I hope you people are clear with fundamentals of microprocessor. Otherwise what will happen, आप लोग normally अगर कोई आंसर लिखते हो तो आपको उसके पीछे का बेस थियरी पता होना चाहिए. Otherwise if you are putting something wrong,
definitely you are not going to get marks. Yes? Accumulator पे कुछ डाउट है किसी को? And it won't take much time, student, even to revise all these topics what you people have proceeded with. Otherwise, what will happen? You people may go proceed with some topics. आप लोग चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, और आपका जो कंटेंट नॉलेज है उस पे आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स उस लेवल पे अचीव नहीं होंगे. ओके, एंड सीएस में मार्क्स स्कोर करना थियरी में इज ओनली इजी विद द क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग. आपको अगर टॉपिक्स क्लियर है तो ही आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अचीव कर सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट दैट इजी. बिकॉज ऑफ दैट हर पॉइंट्स में जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, हर पॉइंट में जो एक्सप्लेनेशन होगा, आई एम गोइंग टू give you in a proper manner. Okay, is that clear? सबको accumulator समझा है, working of accumulator? Any doubt to anyone? You can ask me. क्या करता है एक्यूमुलेटर? वन ऑपरेंड एट अ टाइम स्टोर कर सकता है, और उस ऑपरेंड को फ्री करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है टेम्पररी रजिस्टर में. फिर एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही अंडरस्टूड कर सकता है, एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, एंड देन रिजल्ट भी उसी में आएगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. कैन एनीवन टेल मी एएलयू के बारे में? एएलयू के बारे में आपको क्या समझा है फर्स्ट चैप्टर में? Because all these things are very much important. Temporary registers क्या होते हैं? And if you are preparing for unit test, definitely the component level studies you need to do. What basically is the ALU's work? What basically is the accumulator work? पूरा block diagram के ऊपर questions frame होते हैं. So please go through that complete part of block diagram. As there is a generic microprocessor part is proceeded with or remaining with, I will continue with that. But why I have started this first chapter criteria of quick revision? Because I will come to know most of the times that student actually misunderstood some of the terms. तो कुछ टर्म्स समझे नहीं है, इसके वजह से बहुत सारे चीजों में गलत आंसर्स आ जाते हैं, और स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने रिहर्सल किया है, पढ़ाई किया है, बट उस चीज को मार्क्स क्यों नहीं मिला. सो डेफिनेटली द क्विक रिवीजन ऑफ एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज आपको सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे स्टूडेंट. एंड आपका प्रिपरेशन जो होगा, इट इज नॉट अबाउट टू कंप्लीट अ थियोरेटिकल सेंस ऑफ पार्ट, बट हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगर आप उसे इम्प्रूव करोगे, उसे इम्प्लीमेंट करोगे थियरीज में, it is very much important. Okay, so accumulator का रोल मैंने बताया. Can anyone tell me the temporary registers जो first chapter में already हो चुका है? I'm confirming just because once you know all these criteria are very much important, it is about to understood according to the test also. Even if you are appearing for the unit test or any particular exam, your things must be very much clear according to the examination point of view. Otherwise आपको ये fundamental aspects इतने इजीली मार्क्स नहीं देने वाले. यस, टेम्पररी रजिस्टर्स कोई बता सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ टेम्पररी रजिस्टर्स? Yes. What are temporary registers? Now, one more thing, while writing this temporary registers criteria, they are not just to save temporary results. They are actually some prominent locations from where you can fetch the data. So there is a data bus which actually travels
to carry those particular criteria of elements. So हर एक टाइम पे डेटा बस जो ट्रैवल करता है, जो बोथ द डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है, तो सबसे पहले टेम्पररी रजिस्टर्स में डेटा जो एक्यूमुलेटर से आया है वो एग्जैक्टली कौन से रजिस्टर में जाके बैठा है वो इंफॉर्मेशन सेंस किया जाता है, एंड देन ऑन टू विच हर एक टेम्पररी रजिस्टर्स यूज टू होल्ड सम डेटा according to the operations whatever are going in the ALU. So please understand one thing कि आप जो भी आंसरिंग करते हो उसका एक प्रोमिनेंट फंडामेंटल आंसर होना चाहिए, अदरवाइज मीनिंग विल चेंज, और जब आपका मीनिंग चेंज हो जाता है पर्टिकुलर चीज का तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू गो वर्स्ट बिकॉज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो टेम्पररी रजिस्टर्स आर दोज where you people are going to understand how things are getting stored, how things are getting stored temporarily in terms of data and in terms of binary. I'm talking about data, but data inside microprocessor is a binary data. So always we need to understand these are the prominent locations where data which is in a binary format is getting stored. Otherwise, it is not that easy to understand even temporary registers in terms of microprocessor criteria. So one more easy definition for temporary register is how data is getting counted in some of the locations. Okay, so temporary registers को आपको understand जब करना है, you need to understand with some of the factors कि उसकी कितनी बीट की कैपेसिटी होती है. एक temporary registers कितना बीट स्टोर कर सकता है अकॉर्डिंग टू सम इंटरनल ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं, जैसे कि कोई कैलकुलेशन हुआ, कोई पर्टिकुलर एक्सेसिबल क्राइटेरिया हुआ, तो कितना मेमोरी एड्रेसेस हम लोग एट अ टाइम एक्सेस कर सकते हैं. दैट समथिंग इज एक्चुअली टेम्पररी रजिस्टर. तो टेम्पररी रजिस्टर्स में दो ऑपरेशन स्टूडेंट आपको याद रखना है. वन दैट इज रीड एंड सेकेंड दैट इज राइट ऑपरेशन. सो रीड एंड राइट ऑपरेशन में you at least have more than one single instruction to be taken. Temporary registers क्या करते हैं? They actually use a particular register जिसमें आप read and write में से कोई एक particular instruction achieve कर सकते हो. And each temporary register has got single write and triple read access. Okay, मतलब आप एक टाइम पे modification कर सकते हो and 3 times उसे read कर सकते हो, मतलब access कर सकते हो. That is something is the capacity of temporary registers. Please understand this कि temporary registers का work सिर्फ data store करना नहीं है, कुछ activity result store करना नहीं है, but they can only have one particular criteria that they can perform single write operation and triple read operation. ये उनकी capacity है एक particular temporary register की. And once you want to actually get into this particular criteria, तो आप याद रखना कि एक जो रजिस्टर है वो सिंगल इंस्ट्रक्शन को ही अचीव कर सकता है एट ए टाइम. तो आइदर यू रीड आइदर यू राइट, बट जितने भी टाइम आप परफॉर्म करोगे इंटरेक्शन विद द टेम्पररी रजिस्टर्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि वन सिंगल इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम कैन बी परफॉर्म्ड विद अ टेम्पररी रजिस्टर. अदरवाइज इट इज नॉट दैट इजी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एक्यूमुलेटर एंड टेम्पररी रजिस्टर्स का क्या कम्युनिकेशन होता है, तो नॉर्मली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जितने परफॉर्म होते हैं स्टूडेंट, इट इज वेरी मच कॉमन फॉर टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हाउ स्टोरेज इज गोइंग टू हैपन. तो कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है, बट ऑपरेशन होने से पहले या फिर प्रोसेसिंग होने से पहले, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होने से पहले जो लोकेशंस होते हैं टेम्पररी लोकेशन, वहां पे ये रजिस्टर्स हेल्प करते हैं. where that data is settled, where that data is going to be accessed, all these things are designed according to the temporary registers. So 8-bit का अगर capacity है temporary registers का, तो 8-bit से extra data वहाँ पे जा ही नहीं सकता. So we are having some capacity related criteria of registers. So please write something which is very relevant and which is understandable in terms of microprocessor criteria. That's why I was about to take this chapter in terms of revision criteria. Because if I start with directly one particular topic which is to be continued, it is a quick sort of revision of your understanding of previous topics. That is very much important to me. Otherwise, what will happen? The meaning misunderstanding will lead to some promising criteria of not getting some marks. Because either sir or me, we are onto the same kind of explanations, but whenever you are understanding, your knowledge cannot be going to be deferred with the main criteria of answer. So please understand
जो भी कॉन्सेप्ट आपका हुआ है उससे रीड करोगे प्रॉपरली, and then on to which you are going to have some understanding criteria. So when we are studying 8085, there are some general purpose registers also there, some temporary registers and general purpose registers. So what basically is a general purpose register? Why am I asking these answers? Because once you are clear with all this part, definitely you people are able to write answer without any by-hearting or without any mugging up. This is very much important. Accumulator कितने बीट्स का होता है स्टूडेंट? Yes. What is the capacity of beats that can be taken up at a time by the accumulator? Yes. Good. That is 8-bit capacity. And according to that, if I talk about some flags which are there, some program counters which are there, stack pointers which are there, every of the theory can be asked in a question format for you people. Even some sign flags are there, zero flags are there, auxiliary carry. These are all deep sense concept in the microprocessor, student. If you are not understanding all this concept, definitely you are not able to get some answering done perfectly, because whoever going to check your paper, they are already having all the knowledge of what students are explaining, what type of explanation is needed, some sample solution papers which are there. According to that, they are going to map your answer. At least they need to get some idea what you people have studied in your answer. Otherwise, if an answer does not match, you cannot create some content according to your own way. There is a discipline in studying computer science. तो क्या होता है, हम अपने तरीके से आंसरिंग करने जाते तो बहुत सारे टाइम पे सेंटेंस फ्रेम करते वक्त मीनिंग चेंज हो जाता है. तो डेफिनेटली यू पीपल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग आंसर्स जो कि बोर्ड के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होंगे. तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. एंड इफ आई टॉक अबाउट सम मोर रिविजन लेवल क्राइटेरिया, सो one more thing that is important in the criteria of understanding generic processor, before going for the generic microprocessor, one more thing I want to ask, if there is a add instruction, how many beats are required for you to proceed with the resulting session? अगर आपको addition करना है, subtraction करना है, कितने beats लगेंगे उस particular operation के लिए? Yes. Okay, again, we need to understand, as the capacity of accumulator is to store 8-bit only, everything what is resulted into or calculated into is going to become 8-bit only. So we need to understand how these answering criteria are done, why we need to verify some answers, why exactly this is 8, how it is going to be get calculated, everything that we need to understand in terms of this chapter, because this chapter is actual architecture of our computer system, how computer system works. Otherwise, this is not that easy when you are actually having a study level criteria. Okay. Now, one more thing that I want to tell you, the difference in terms of microprocessor and generic criteria. The criteria of buses, there are address bus and data bus which is available. If I talk about data bus and if I talk about address bus, what difference you get from these two? अगर आपने डेटा बस को स्टडी किया है, अगर आपने एड्रेस बस को स्टडी किया है, आप इन दोनों को कैसे यूटिलाइज करोगे इन माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर? दैट इज वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क बिफोर गोइंग फॉर दिस माइक्रोप्रोसेसर, जेनरिक माइक्रोप्रोसेसर क्राइटेरिया. बिकॉज आपको अगर माइक्रोप्रोसेसर का फंडामेंटल नहीं समझा है तो जेनरिक माइक्रोप्रोसेसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जाएगा. इसलिए मैं पहले थोड़े क्वेश्चन पूछ रहा हूँ टू गेट प्री आइडिया अबाउट हाउ यू पीपल हैव अंडरस्टूड प्रीवियस सेशन. And because of that only we can go ahead with the next fundamental criteria. Okay, what is the role of data bus and address bus? Can anyone tell me?
Yes. What is the difference in data bus and address bus? Because data bus and address bus are very much important in terms of microprocessor block diagram. Why we are using buses? See, once I confirm with all these things, starting with generic processor is not a big deal. But the chapter itself has got some weightage where your knowledge confirmation is very much required. Because what happens is first basic part is not understood, then it goes with the second basic part with the complexity. Okay. Actually, data bus is a traveler where it actually goes to and fro to a particular location, and it communicates well with the peripheral criteria. And definitely address bus is to know the locations, how things are getting traveled, how temporary registers are going to get identified, everything that is to be counted in terms of identifying locations. So this all things are contributing even to the generic processor. And if I talk about generic processor, now don't get confused with the microprocessor and generic processor, generic microprocessor. Generic means overall concept of the processor criteria. If I want to have an architectural type, then it is very much important for you to understand how microprocessors are constructed. In that, there are different families of microprocessor. Then we are having 8085, 8086. So when we are proceeding with the chapters and they're working, definitely basic core concepts are very much important. So I'm going to start generic microprocessor in upcoming lecture, not in this lecture. But before going for that particular lecture, you people need to revise a bit. You people need to revise that previous part, whatever you people have completed, and we'll continue with the fresh as that particular topic. So as in today's lecture, most probably maximum of the time is went into a particular type of technical issues and most of the criteria of format. But from the next lecture onwards, it is not going to happen, as I got to know some technical repairments that are required. So I definitely going to start afresh with upcoming lecture. But I hope you people are getting few understanding about what previously need to be done and what people you people are going to learn in the upcoming lecture. So generic microprocessor topic मैं next lecture में start करूंगा. अभी सिर्फ fundamentally मुझे आपसे ये particular criteria define करना है कि आपको previous जितने भी topics आपके हुए वो please थोड़ा सा revise कर लेना, because जब आगे के टॉपिक्स प्रोसीड होंगे तो पीछे के टॉपिक्स की मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आगे प्रोसीड होती जाती है, इनहेरिट होती जाती है. तो थोड़ा प्रिपरेशंस करके आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा गो थ्रू करके आना है, अदरवाइज यू विल गेट इजीली कनेक्टेड अगर आपके बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. ओके Okay, then thank you all of you. We'll continue this particular topic in the upcoming lecture. Okay, so I'm going to start generic microprocessor from the upcoming lecture. Till the time, you people please revise with the previous topics. Okay, thank you everyone. Thank you. Okay, thank you sir. Sir, मीटिंग एंड कर देता हूँ मैं. Okay, चलिए. Thanks. Okay.